about the cube. How many faces does it have? Tell me, guys, how many faces? 6. 6 faces, very good. And how many corners? 12. Sorry, Hanifa? 12. 8, right? Yeah. And how many edges? Okay. So most of the students, they get confused on how many edges. Very easy method to remember how many edges is that you make a cube. So you will start with 4 sides, right? We have now 4 edges. Then in the back, you will make another 4. Now we have how many edges? 8 edges. 4 plus 4. 8, 9, 10, 11, 12. All of you understood? Yes or no? Please tell me. How to remember number of edges? Guys, what happened? Alan, Farhat, Hanifa, and Hiba, can you please reply to me, guys? Yeah. Okay. Yes, sir. Now, how many edges we have? We have 12 edges. Okay. Now, if I keep an atom on the face, now for that, we have to make a few adjustments here. Just a second. Let me get it a bit small. Now, let us suppose I'm keeping an atom on this face. Okay. So what part of this atom is inside the cube? How can we know? We have to know how many cubes are sharing the wall. This is one face, right? Now, as you can see, if I keep an atom here, half of the atom is in the cube number 1, half of the atom is in cube number 2. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. That means if I keep an atom inside on a face center, then half of the atom will be inside the unit cell. Now, when I write cube, or when I say cube, or when I say unit cell, you understand it is the same thing. One unit cell is what? It is a building block of a particular lattice. So when we have a particular, let us suppose we have different bricks now. So these are bricks of a solid. Solids are made up of different unit cells. Right? Now, faces have what? It has a contribution of half. Half of the part is inside the cell. Now, if I take a edge, then in the case of edge, if I keep the atom here, this is my edge center, right? This is my edge center. Now, if I keep an atom on the edge center, it is shared by how many unit cells? It is shared by 4 unit cells. Okay. As you can see, you can keep one of the identify the corners and the edges and the faces in your own room. Take any one of the edges, right? If you take any one of the, let me take the edge on your left side. So let us suppose you're sitting here and this is the left side of your edge. Now this edge is shared by the next room, right? So that edge is now shared by 2 rooms. And that edge is also shared on the top floor. So we have total how many rooms? With the same edge, we have 4 rooms. That is why the contribution of this one will be 1 by 4. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Next we have, just erase this thing. Corners.
Okay. Now, if I keep an atom on the corner of a cube, then please understand, take any one of the corners of your room, and I will tell you guys to take top left corners. And if you're sitting here, then this is the corner that you have to take. Now that corner is shared by the room adjacent to you. It is also shared by the room that is in front of you. Both the rooms that are in front of you. And these are the 4 rooms that are sharing that corner. And that corner is also shared by the rooms, the 4 rooms of the top floor. That means one corner is shared by how many cells? How many unit cell? It is shared by 8 unit cell. That means in a unit cell, 1/8 portion will be available. All of you understood this also? Yes or no? Please tell me. ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. So please write this down. And if I keep an atom inside the body, like body center me, if I keep the atom inside the complete cell, then the whole atom will be inside one cell. And that is why if you keep in body center, its contribution is 1. Okay, its contribution is 1. That means the whole atom is inside one unit cell. If I keep an atom on the face, then only half of the atom is present in one unit cell, the half is present on the adjacent unit cell. If I keep on the wait a second guys, ये हमें थोड़ा सा उल्टा लिख दिया. Corners will be 1/8 and edges will be 1/4, है ना? दूसरी जगह लिख दिया था. I wrote corners के केस में हमने edge वाला केस लिख दिया था. ठीक है, please correct this down. If I keep any atom on the edge center, then that edge center atom will be 1/4 inside a unit cell, 1/4 in another unit cell, and 1/4 in the 2 other unit cell. And in the case of corners, it will be shared by 8 different atoms. So the contribution of an atom inside a unit cell, it is 1/8 for corner, 1/4 for edges, and 1/2 for face center. But if I keep the whole atom inside a unit cell, I'm not keeping it on the face or on the corner or the edge. पूरा का पूरा atom कहाँ पे अंदर है? That means we are keeping in the body center. In that case, the whole atom is inside one unit cell. That is why the contribution will be. I hope all of you have written this down. Now, write this portion. I will explain each and everything here. First of all, please see there is a number called coordination number. Okay? Coordination number. What is coordination number? Coordination number tells you the number of atoms touching. If I choose one atom and how many other atoms are touching them. In 1D packing, what is 1D packing? In 1D packing, we will take an atom. See, this is एक point जो होता है ना, इसको बोलते हैं 0 dimension, कोई dimension नहीं होता है. Then if you have a line, then this is 1D. आप 2 line ले लीजिए and then इन दोनों connect कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? You will get 2D. आप 2 2D structures ले लीजिए, यानी कि 2 square ले लिया आपने. आप इन दोनों को connect कर दीजिए, then what you will get? You will get 3D. ठीक है? हमारी क्षमता इतनी है कि हम 3D तक ही समझ सकते हैं, 3D तक ही सोच सकते हैं, 3D तक ही visualize कर सकते हैं. Otherwise, if you go through this concept, you take 2 3D structures and combine them, then you will get 4 dimension. You take 4D, आप 2 4D structures को ले, you combine and you join them, you will get 5D. So maths में इस तरह से when they talk about n dimensions, 11 dimensions and so on, then they are taking that theoretical aspect. And obviously, since our world and our perception of reality is such that we can only perceive 3D structures, तो हम लोग 3D तक ही लिमिट करते हैं. रियलिटी इज स्टिल 3D, तो इस वजह से आपको केमिस्ट्री में भी 3D तक ही देखना है ना. नाउ बट
Understand this pattern here. 0D is a point. If you take 2 points and connect them, क्या बन गया? 1D बन गया. If you take another 1D structure and then combine them, क्या बन गया? 2D बन गया. Now you take one more 2D structure and you combine them, क्या बन गया? 3D बन गया. ठीक है. So the same way we are going in this solid state also, 1D packing, 2D packing, then 3D packing. ठीक है. But please remember 1D packing does not exist in real life. समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. Similarly 2D packing भी exist नहीं करता है. समझने के लिए फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं सर. ठीक है. So that we can start with a level. Now what is zero? If I talk about zero dimensions, then I will take only one atom. इसका कोई dimension नहीं है. I will take only one atom. Now, if I take 1D packing, that means I have to take a line type of atom. We have these atoms which are forming a line. Now, it doesn't matter whether you take horizontally or vertically, it is going to be the same thing. आपको एक मिला. Now, in this case, you have to tell what is the coordination number. So choose any atom. So I will choose this atom here, right? I will choose this atom, and this atom is touched by 2 atoms. So the coordination number of 1D packing is equal to 2. Now, a question may arise that, sir, why are you not taking this one? So I will say that we take or we choose the atom whose environment is completely made up. क्या इसका environment completely made up है? Can we add any other atom on it? Yeah, I can add one more atom on it ना यहाँ पे. But if I take this atom here, इसका environment completely made up है. You don't have, if you want to add any other atom, you cannot add any other atom. That means this atom is environmentally complete, and this atom is not environmentally complete. And that is why we take, whenever we talk about coordination number, we take such atom whose environmental is completely made up. It is complete. Okay, so all of you understood what is coordination number? The number of atoms we touch. एक atom कितने atoms touch करे? 2 atoms touch करे. ठीक है? That is coordination number in 1D packing. Now when we move to 2D packing, समझते हुए चलिए थोड़ा सा तो आसानी हो जाएगी. 2D packing में क्या करेंगे अब हम? आपको लेंथ तो मिल गया. Now we can add breadth also. Now when we are going to add atoms in this direction, आपने इस direction में atoms को डाल दिया तो 1D packing मिल गया. Now you have to use another dimension. There are 2 different ways in which you can add atoms. Either you can add atoms on top of atoms like this. इससे आपको मिलेगा square close packing. क्या मिलेगा? Square close packing in 2D. Other way that you can use is that you add atoms on voids. ठीक है? So these are the voids. आप इसमें atoms को डालिए बीच में. And इससे आपको कैसा structure मिलेगा? इससे आपको मिलेगा HCP, hexagonal close packing. You will get hexagonal close packing in 2D. Now, next case that we understand is packing efficiency. How efficient is the packing? यानी कि उसमें कितने? If I take, for example, square close packing का example आपको देते हैं. This is approximately a square close packing. And in a square close packing, if I take a unit cell like this, then इसके अंदर, this is the one unit cell which is present, and this unit cell has some atom and there are some void. So what percentage is packing efficiency tells what percentage is atom and what percentage is void. So percentage, the packing efficiency key, that is 78%. That means 78.5% is atom inside this, and the percentage of void will be equal to, tell me how much? Void का percentage कितना हो जाएगा? If 78.5 is the 21.5. void percentage will be 21.5%. Similarly, in hexagonal close packing, yes, somewhere around 28. Yeah. In hexagonal close packing, you will have void percentage as how much? 9.4. 9.4. Okay. All of these are 2D. Now, when we move on to, अब देखिए, ये पढ़ते रहे तो हम लोग बहुत मजा आता, लेकिन क्या कीजिएगा, सॉलिड स्टेट हटा दिया हमने, सिलेबस से ही हटा दिया. There were 2 chapters that should not be removed. एक तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर था जिसको नहीं रिमूव करना चाहिए था. दूसरा चैप्टर जो 11th में रिमूव किया गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसको भी नहीं रिमूव करना चाहिए था. स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ पोर्शंस हटा देते हैं, बट दे रिमूव्ड इट कंप्लीटली. Now we have square close packing. अब इसमें हमको 3D करना है. We have added length, we have added breadth. अब इसमें height add करेंगे. Now that can be also done in 2 different ways. Either I can put atoms. So ये देखिए आप, this is
रेड एटम, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आई कैन पुट एटम ओवर एटम, इस तरह से पुट कर सकते हैं, राइट? आई कैन पुट एटम ऑन एटम लाइक दिस। एक तो ये तरीका है, ठीक है। नाउ अनदर वे इज दैट आई कैन पुट एटम ऑन द void। ये जो यहाँ गड्ढा है ना बीच में, यहाँ पे हमने एटम को डाल दिया, इससे दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इफ आई पुट एटम ऑन एटम तो हमको मिलेगा सिंपल क्यूबिक। If I will put atom inside void, I will get BCC, that is body centered cubic। ठीक है, that is body centered cubic। उसी तरह से hexagonal close packing में, now the way we are putting atoms and making 3D structures is very different in hexagonal close packing। तो समझाना बड़ा भी मुश्किल होगा छोटे से टाइम में। दैट इज आप इसमें ये समझ लीजिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैक में आपको दो मिलते हैं, एक हेक्सागोनल क्लोज पैक में 3D मिलता है और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक मिलता है। यू गेट फेस सेंटर्ड क्यूबिक व्हिच इज आल्सो CCP। Please write this whole thing down and then I will explain what are this Z। Z तो आपको नहीं पता है अभी, coordination number पता है, the number of atoms touching each other। Then I will tell you what is A upon R, what is packing efficiency पता है आपको, and what type of voids are present। ठीक है, then please write this down, let me know once you're done। अभी सब कुछ लिख लीजिए, टीवी ओवी जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि एब्रिविएशन से, सब समझा देंगे हम, डोंट वरी।
Let me know once you're done writing. Guys, done? Yes, Alan, Farhat, Saif. Yes, sir. Okay, fine. So let us understand the terms here. What is Z? Z tells you about the number of atoms in a unit cell. So simple cubic में क्या होता है? Simple cubic is like this. It is a cube, and the atoms are present on the corners. Atoms कहाँ पे होंगे? It will be present 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Atoms are only present at what corners? तो फिर आप बोलेगा सर अब तो 8 atoms है. Why it is written as 1? It is written as 1 because each corner atoms. How many corner atoms do we have? We have 8 corner atoms, and each corner atom it contributes 1/8 inside a unit cell. एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन होता है? 1/8. So this will be equal to how much? This will be equal to 1. Right, and it will get cancelled. Then we have body centered cubic. ठीक है? Body centered cubic में क्या होता है? In body centered cubic you have a simple cube, and inside that simple cube we have one atom also in the body center of the cube. Now what does this make? This makes, so for the contribution of corners we have 8 into 1/8 plus 1, that is inside. So 8 into 1/8 will be equal to 1 plus 1, that will be equal to 2. So basically we have 2 atoms inside the unit cell. Then similarly in hexagonal close packing we have 6 atoms inside the cell. In face centered cubic we have 4 atoms inside the cell. ठीक है? So Z tells you about the number of atoms inside the unit cell. आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है? याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है. सिंपल क्यूबिक और बीसीसी का आपको याद रखना पड़ेगा. सिंपल क्यूबिक में 1 रखिए याद. बी से होता है बाई, बाई से होता है 2, याद रह जाएगा. एचसीपी में क्या होता है? हेक्सा. हेक्सा का मतलब क्या हो गया? 6, याद रख लीजिए आप. एफ से होता है 4, और एफसीसी में भी क्या होता है? वी हैव 4. ठीक है? सो देयर इज अनदर नेम ऑफ एफसीसी दैट इज नोन एज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग. क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग जब आपके बात आए तो यूनिट सेल इज गोइंग टू बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर the Z for each case. Simple cubic में 1, BCC में 2, hexa में 6, and FCC में 4. Then we have the coordination number. Coordination number, that means each atom in a simple cubic is going to touch 6 atoms. है ना? अब इसको याद कर लीजिए, explanation करेंगे सबको बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है? अच्छा चलिए एक explanation आपको simple cubic का दे देते हैं, उससे शायद आपको पता लग जाए. Let us suppose we have an atom here. ठीक है? Now if I go down, there will be an atom here. If I go on the right side, there will be an atom here. I'm just traveling on the edges now. ठीक है? Because corner से corner हम जा रहे हैं. If I move here, there will be an atom, एक, right?
इफ आई मूव अपसाइड ऑल्सो, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, एक एटम मिलेगा, राइट? इफ आई मूव outside, then also I will get an atom. If I move inside, then also I will get an atom. ठीक है? And this atom is touching all of these six. ठीक है? अब I will make the cube. फिर आपको शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आए. ठीक है? As you can see, this is one corner, है ना? इस तरह से दो रूम है, उसी तरह से आपके पास इधर भी दो रूम हो जाएंगे और उसके ऊपर चार हो जाएंगे, कितने, चार रूम हो जाएंगे. ठीक है? But this atom is taking how many? One on the right, one on the left, one on the top, one on the bottom, one on the inside, one on the outside. टोटल कितने हो गए? 6 हो गए. उसी तरह से बीसीसी में आपके पास 8 होते हैं. हाउ इट इज 8? अब याद कर लीजिए. ठीक है? टाइम नहीं बचेगा फिर. We have 6 in simple cubic, we have 8 in BCC. हेक्सागोनल में 12 होते हैं और एफसीसी में भी 12 होते हैं. ठीक है? सो हेक्सागोनल एंड एफसीसी को साथ में याद रख लीजिए, 12 और 12 होते हैं. नाउ व्हाट इज A upon R? A is the edge length and R is the radius of atom. Radius of atom. If I talk about simple cubic, तो simple cubic के किसी एक फेस को आप ले लीजिए. Now each phase it has how many atoms? It will have 4 atoms like this. ठीक है? इस तरह से. Now this whole thing is the edge center, edge length A. This one is 1 R, this is another R. So I can say A is equal to 2 R. So this is the relationship between what? A and R. Similarly, in body centered cubic, we have the relationship A root 3 is equal to 4 R. HCP में आपको याद नहीं रखना है. Then in FCC, we have A root 2 is equal to 4 R. ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. Then we have packing efficiency, that is 52.4% in simple cubic, 68% in BCC and 74% in both HCP and FCC. Voids की अगर हम बात करें, then simple cubic has a cubical void. Now HCP में होते हैं आपके पास 6 octahedral and 12 tetrahedral voids. Similarly HCP में and FCC में आपके पास होते हैं 4 octahedral and 8 tetrahedral voids. Now in this structures if I talk about, then आपको ये पता चल रहा होगा, the number of octahedral voids is equal to n. n का मतलब क्या हो गया? Number of atoms inside unit cell. And number of tetrahedral voids will be equal to 2n. यानी कितने हो गए? 6 atoms थे तो 12 tetrahedral voids. 6 मतलब 6 and 12 tetrahedral voids, तो क्या relation हो गया? 2n. Here also you can see number of octahedral voids is equal to the number of atoms, that is n. Number of tetrahedral voids is equal to 2 into the number of atoms, that is 4. So 2 into 4 will be equal to 8. So I can write 2n. Please इसको भी लिख लीजिएगा. Octahedral voids n होते हैं, tetrahedral voids 2n होते हैं, और FCC में और HCP में दोनों के केसेस में. Sir, what does CN represents? Coordination number. It tells you about how many atoms are touching a particular atom. एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं. No. Moving on, we have limiting radius ratio for various types of voids, है ना? Various type of voids, and उसकी वजह से आपको क्या मिल जाएंगे? उसकी वजह से आपको मिलेगा different types of solids also. For example, अच्छा बेसिकली ये आ कहाँ से रहा वो भी आपको बता देते हैं. Where is this coming from?
look at this picture here. Now in this case we have 3 atoms, or 3 atoms जब होते हैं, then these 3 atoms they make a triangle. और जो ये जो बीच में स्पेस बोलते हैं ना, this space is what? This is known as void. ठीक है, जो खाली जगह है. And since the atoms that are making a void, they make a triangle when I join the midpoints of those atoms. That is why इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है trigonal void. क्या बोलते हैं इसको? Trigonal void बोलते हैं. Now, whenever we have a solid and which is ionic in nature, तो ionic solid में आपके पास होते हैं एक positively charged होता है cation, and we have negatively charged anion. ठीक है, we have negatively charged anion. Now, obviously, cation is small in size because if you remove electron, the attraction becomes more effective and the size becomes small. And ion, if you add an electron, repulsion की वजह से size बड़ा हो जाएगा. Right? This is large in size. Now, in a particular ionic solid, the cations are present inside the void. क्योंकि void खाली जगह होती है, छोटी जगह होती है, और anions they make the packing or they make the lattice. ठीक है, anions के atom होते हैं और जो बीच में खाली जगह होती है वहां पे क्या होता है? वहां पे cation होता है. Now, if you look at this structure, तो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि सर ये तो देखिए 3 तरीके से आपके स्ट्रक्चर बन सकते हैं. एक तो क्या हो, 2 तरीके मेनली आप बोल सकते हैं. You have atoms like this जो टच कर रहे हैं, और एक एटम ऐसा हो सकता है जो टच ना करे. ठीक है, most people will think that sir ये ज्यादा अच्छा है, ऐसा if you have this type of pattern this is better, but I will say no, it is not better. Why? Because the negatively charged anionic species, these are touching each other, and when they will touch each other there will be repulsion, and that is not stability. That means the anionic atom should not be touching each other. That is the best condition, है ना, तो touch नहीं करना चाहिए. Now as we get closer, जितना हम इसके नजदीक जाते जाएंगे तो उतना क्या हो जाएगा? रिपल्शन बढ़ता जाएगा. ठीक है, बट as we go further away from it, है ना, हम क्या करें, एटम्स को दूर दूर अगर रखने चले जाए, then what will happen? एक से ज्यादा एटम्स यहाँ पे आ सकते हैं, कैटायन का स्पेस बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. And that is why there is always a range in which the radius of cation and the radius of anion should be present. Now when this small r is the radius of cation, when the small r, that means the radius of cation upon radius of anion, it is between 0.155 and 0.225, then we can say that in that range if I have a cation, उसको कौन सराउंड कर सकते हैं, कितने एटम सराउंड कर सकते हैं? Then it can be surrounded by 3 atoms only. But if the radius of cations get larger, उसके लिए कितने एटम्स चाहिए होंगे? फिर उसको सराउंड करने के लिए 4 एटम्स चाहिए होंगे, and that will make a tetrahedral void. If the radius of cation increases furthermore, then we will require more number of atoms to cover it. क्या हो जाएगा? फिर वो octahedral हो जाएगा. And if the number is even more, then we will be requiring 8 atoms to cover it, making a cubical void. ठीक है, तो ये concept है basically radius ratio का. इसको लिख लीजिए, you have to remember these values. ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखने पड़ेंगे, एंड उसके हिसाब से आपको क्या रखना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर. You have to remember the coordination numbers. इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं. There are basically 3 numbers that you have to remember: 0.225, ठीक है, and then you have 0.414, and then the last you have 0.732. ठीक है, अगर 0.225 से कम हुआ रेडियस रेशियो, then it is going to be what? It is going to be trigonal. The void will be what? Trigonal. और वहां पे coordination number हो जाएगा 3 एटम सराउंड कर सकते हैं. If the radius ratio is more than 0.225, then it is going to be what? Then it is going to be tetrahedral. And उसके लिए हमको क्या चाहिए? 4 एटम चाहिए सराउंड करने के लिए. If it is
between 0.225 and 0.414. अगर 0.414 से भी ज्यादा हो गया तब हमको 6 एटम चाहिए होंगे and that will be making octahedral void. Octahedral. And if it is 0.414 से भी ज्यादा हो गया, 0.732 से भी ज्यादा है, 732 के बाद क्या मिल जाएगा आपको? You will need 8 atoms to surround it, making a cubical void. Please let me know once you're done, guys. लिख लिया सबने? Yes or no? Please tell me. 1 minute, sir. ये डिटेलिंग तो सब चीज में होती है, बट क्रक्स समझ लीजिए, किसी भी छोटी चीज को सराउंड करना कम चीजों से सराउंड किया जा सकता है। जैसे भी कोई चीज बड़ा होता जाएगा, देन यू विल नीड लार्जर थिंग्स और मोर नंबर ऑफ थिंग्स टू सराउंड इट, है ना? उस वही सेम कंसेप्ट है बिल्कुल यहाँ पे। इफ यू हैव स्मॉल कटायन तो वहाँ पे 3 एटम से काम चल जाएगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो आपको 4 चाहिए, उससे बड़ा हुआ तो फिर आपको 6 चाहिए, उससे बड़ा हुआ तो फिर आपको 8 एटम्स चाहिए उसको सराउंड करने के लिए। ठीक, ऑल ऑफ यू डन? स्नैप लिख लिया आपने? Yes, sir. नेक्स्ट आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन करने के लिए द रीजन इज ओनली दैट समटाइम्स दे यूज दीज नेम्स, ठीक है? तो जब ये बोले ना रॉक सॉल्ट टाइप, तब आपको क्या मतलब समझ में आना चाहिए? दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका क्या मतलब है? एफसीसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? इन एफसीसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी विल हैव सोडियम पॉजिटिव, वो कहाँ पे होगा? दैट विल बी प्रेजेंट इन वाइड, ठीक है? एंड Cl नेगेटिव व्हिच इज एनायन, दैट विल बी मेकिंग द लैटिस। लैटिस क्या है आपके पास? सीसीपी लैटिस है। देन उसके बाद आपसे अगर कह दिया जाए कि सीसीएल टाइप बना रहे हैं, सीसीएल टाइप बना रहे हैं, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा दैट इट इज बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जैसे ही बोला, आपको ये सारी चीजें ध्यान में आनी चाहिए फिर कि उसका Z होता है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, है ना? तो नॉट गिविंग यू द करेक्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बीसीसी, दे विल टेल दैट दोस आर हैविंग CSCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। CS यहाँ पे क्या होगा? बॉडी सेंटर की क्यूबिक वॉइड में होगा एंड Cl विल बी मेकिंग द होल लैटिस। देन यू हैव ZnS टाइप। ZnS टाइप में भी आपके पास क्या होगा? CCP होगा, बट CCP में आपके पास जो कैटायन है दैट विल बी प्रेजेंट एट 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड एट ऑल्टरनेट, और यू कैन से लाइक 50% टेट्राहेड्रल वॉइड क्या मतलब क्या होगा? एक छोड़ के टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? एंड S2 पॉजिटिव, S2 पॉजिटिव नहीं होगा, दिस इज S2 नेगेटिव, this will be present and making the cubic close packing. Now then we have calcium fluoride. Calcium fluoride is also making CCP, but ये जो CCP होगा, then in this CCP the calcium 2 positive will be present. Now calcium 2 positive is going to be present and making the complete lattice, और F negative present होगा कहाँ पे? टेट्राहेड्रल वॉइड में। इस केस को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये एक ऐसा केस है जहाँ पे आपके पास क्या होता है? फ्लोरीन नेगेटिव, these are present in the voids rather than on the lattice sides. Then you have sodium ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में आपके पास Na पॉजिटिव होंगे THP में, वाइट्स में, एंड O2 नेगेटिव होगा आपके पास लैटिस साइड्स में। Then here you have ZnS and this is zinc blend था पहले वाला, and this is now woodsite. In woodsite what we have? The same type of configuration, that Zn2 plus is present at
50% of THV and S2 negative is present at HCP. ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा. ZnS एक होता है जिंक ब्लेंड जिसको बोलते हैं. Okay, now this zinc blend is CCP, यानी कि face centered cubic होता है. And if it gets converted to woodsite, then it changes the structure to HCP. Please write this down. Let me know once you're done writing. Yes, done guys. Yes or no, please tell me. 1 minute, sir. Okay.
Then Last one, sir. So can you explain what is 1:1, 2:1 ratios means? वो कटायन और अनायन का रेशियो है ना, एक अनायन और एक कटायन, एक कटायन और एक अनायन, एक कटायन एक अनायन, एक कटायन दो अनायन, दो कटायन एक अनायन। Got it? Okay, sir. अब ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको कर लीजिए, इससे सवाल जनरली आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज डिफेक्ट्स। समझ देते हैं इसको, अच्छे से समझ लीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। एक तो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड देन ये डिफेक्ट्स होती हैं और कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज को भी वो डिफेक्ट में कैटेगराइज करके उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। बट बेसिकली डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं, स्टोशियोमेट्रिक और एक नॉन स्टोशियोमेट्रिक। क्या मतलब है स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक का? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव NaCl, now in stoichiometric defect the number of sodium atoms in the complete mass of NaCl, अगर इतना बड़ा NaCl का आपके पास ब्लॉक है, अब इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, but due to that defect the number of sodium atoms or the ratio of number of sodium atoms and the chlorine atoms is not going to change. अगर 100 सोडियम है तो 100 क्लोरीन एटम्स भी होंगे। now those things are known as what, those things are known as stoichiometric defect। अच्छा, इस स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक को बोलते हैं शॉर्ट की और एक को बोलते हैं फ्रैंक। शॉर्ट की डिफेक्ट की एग्जांपल हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव ओके, इस पे फोटो देना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, बात को समझने के लिए फोटो देख लीजिए। इन दिस केस वी हैव सो इन दिस केस वी हैव AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। NaCl आप मान सकते हैं यहाँ पे, आप A पॉजिटिव को Na प्लस ले लें, B नेगेटिव को आप Cl नेगेटिव ले, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? इन दिस केस आपके पास कुछ एटम्स मिसिंग है। नाउ दिस एटम was supposed to be what? This atom was supposed to be B, that was missing. This atom was also supposed to be what? This was a B, which is missing. ये atom को क्या होना था? This was A, which is missing. This atom was also A, which is missing. How do I know it is A? Because इसके जस्ट सामने क्या है? B है, तो B के जस्ट सामने क्या होगा? A हो। B और B साथ में नहीं हो सकते, right? Now, as you can see, the number of cation and the number of anion that are missing, they are equal. And when you have equal number of anions and cation missing, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास? The number, I would say that the ratio of cation and anion, they are not going to change. ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या है? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और यहाँ पे क्या हो चुके हैं? एटम्स शॉर्ट हो गए। क्या बोलते हैं हम इनको? एटम्स गॉट शॉर्ट। कम हो गए ना, गॉट शॉर्ट। शॉर्ट से आप याद रख लीजिए शॉर्ट की डिफेक्ट, कम हो जाना शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट से आप याद रखिए शॉर्ट की डिफेक्ट। दूसरा होता है आपके पास फ्रैंकल डिफेक्ट। लेट मी गेट द फ्रैंकल डिफेक्ट आल्सो। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल को आप ऐसे याद रखिएगा, फ्रैंकल में चीजें क्या हो जाती है? फ्रैंक हो जाते हैं, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? फ्रैंक हो जाते हैं। सी ठीक है, यहाँ पे देखिए we have Na plus Cl negative, Na plus Cl negative, लेकिन here we were expecting a Na positive atom. Now this Na positive atom, due to something what happened, it displaced and it got here. ये क्या है? अपने पोजीशन से दूसरी जगह चला गया, इधर दोस्ती करने चला गया। क्या करने? दोस्ती करने चला गया, बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहा है। बिकॉज इट इज गेटिंग फ्रैंक, बिकॉज इट इज गेटिंग फ्रैंक, तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा फ्रैंक हो गया, दैट इज इट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया, है ना, अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया, बहुत ज्यादा फ्रैंक हो गया, दैट इज इट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। नाउ
देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बोथ शॉर्टकट इफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। सबसे पहले उसको देखते हैं डेंसिटी में क्या चेंज आता है। since cation and anion are missing in shortcut effect, there is less number of cation and anion. That means the mass will decrease, number of atoms are less, so mass will decrease and density will also decrease. ठीक है। Now in this case, if you see the coordination number, तो coordination number इसमें क्या हो जाएगा? Coordination number is going to be high and dielectric constant is going to remain constant. ठीक है। LRR हम आपको बाद में बताते हैं, अब इसको देख लीजिए। Density is unchanged in the Frankel defect. Why? Because in Frankel defect we are not removing any atom. Now in this case coordination number क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, because these atoms are not touching anything. Coordination number क्या हो गया? टच हो गया, कम हो गया। Dielectric constant is also going to increase because sodium positive ion is can travel now. यहाँ पे एक void आ गया आपके पास, so void की वजह से क्या हो सकता है? This sodium atom can now go here. अब यहाँ पे एक void आ गया, फिर sodium atom यहाँ पे आ जाएगा। So in that case, what we can say that dielectric constant has increased. Now let us talk about the impurities. Impurities जो आ सकते हैं, that can come because of cationic vacancy. Cationic vacancy आ सकता है, that means क्या हो जाएगा? कोई cation है आपके पास, मान लीजिए Na positive, cation को replace कर दिया क्या? दूसरा cation, मान लीजिए Sr2 positive, ठीक है। So when the cation is getting replaced, उसमें क्या जाएगा? Introduction of cationic vacancies NaCl by substitution of Na plus and Cl. दूसरा एग्जांपल आपके पास है AgCl में आपके पास क्या आ जाए? Ag के बदले Cd आ जाए, कैडमियम आ जाए, तो उसको में क्या बोलेंगे हम? उसमें बोलेंगे that it is impurity defect. In non-stoichiometric defect what happens? The number of atoms of cation and anion, they are not equal. उसके रेशियो क्या होते हैं? बराबर नहीं रहते, उसको क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंट। उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, मेटल की या तो डेफिशिएंसी हो जाए या फिर मेटल का क्या हो जाए? एक्सेस हो जाए। इफ मेटल डेफिशिएंसी तो उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल यानी कि कैटायनिक स्पीशीज अगर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इफ कैटायनिक स्पीशीज इंक्रीजेस, ज्यादा कैटायनिक स्पीशीज आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। Now please this note this point. Metal excess defect due to anionic vacancies, that is anion is absent from the site which is occupied by an electron, this is known as F center. ये तो पूछ सकते हैं सीधा सीधा what is F center, उसमें आपको रीजन देना। Please write this down. अच्छा, बिफोर दैट हम एक चीज भूल ही गए, एलआरआर आपको समझा देते हैं। दिस लिमिटिंग रेडियस रेशियो है ना, एलआरआर क्या है आपके पास? रेडियस रेशियो रूल जो हम लोगों ने पढ़ा ना, उन्हीं के बारे में। इन शॉर्टकट इफेक्ट व्हाट हैपेंस व्हेन द कैटायन एंड एनायन बोथ आर रिमूव्ड, कब उस केस में होगा? इन द केसेस इन व्हिच द कैटायन साइज इज वेरी हाई। क्या हो? शॉर्टकट इफेक्ट कब होता है? जब आपके पास कैटायन की साइज क्या हो? काफी ज्यादा हाई हो, तब कैटायन वहां से निकल सकते हैं। बट इफ यू हैव कैटायनिक साइज व्हिच आर स्मॉल, द रेडियस रेशियो इज स्मॉल, तो कैटायनिक स्पीड क्या होगी? छोटी होगी, एंड छोटी होने की वजह से इट कैन मूव हियर एंड देयर। ठीक है, दिस इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो।
Let me know once you're done, guys. Let me know once you're done, guys. Let me know once you're done, guys. I'm done, sir. Try this question. Then we will look at other questions in the next class.
Okay, Hanifa, let me see. Hmm, no, Hanifa, try once again. See here. Acha, there is one thing that I wanted to tell you, but I forgot here. When you have non-stoichiometric defect, जिसमें आपके पास metal deficiency और metal excess defect ये सारे होते हैं, and then there is impurity defect, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एक तो introduction of cation होता है, ठीक है, so these are this type of Frankel defect and Schottky defect जो कि non-ionic species में होते हैं. In ionic species, you have Schottky and Frankel. ठीक है, और non-ionic में Schottky के भाई को बोलते हैं vacancy defect और Frankel के भाई को बोलते हैं interstitial. Both are same type of defects, but जो आपके पास आयनिक में होता है दैट इज शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, नॉन आयनिक में उसी शॉर्टकी को वेकेंसी बोलते हैं और फ्रैंकल को इंटरस्टिशियल बोलते हैं. ठीक है, सो फ्रैंकल डिफेक्ट इज गोइंग टू बी आयनिक एंड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज गोइंग टू डू व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज गोइंग टू फ्रैंकल में रिमेन कांस्टेंट. सो ए विल बी 4, शॉर्टकी डिफेक्ट में इट इज आयनिक एंड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, दिस विल बी 3. वेकेंसी कैसा होता है, वेकेंसी डिफेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट, वेकेंसी डिफेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ शॉर्टकी. तो डेंसिटी क्या होगी इसमें, डिक्रीज कर जाएगी. सो नॉन आयनिक डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, तो ये हो जाएगा आपके पास 4. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, द नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस, दैट इज सेकंड. सो अच्छा, दिस इज नॉट 4, दिस इज 1. ए का 4 इज ए एंड ए का 4 इज बी. देन बी का 3 यहाँ पे भी है, बी का 3 यहाँ पे भी है. सी का 1 ए में, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन.